Big news coming in the Baba Siddique killing. The crime branch has now claimed that the Lawrence Bishnoi gang is behind the murder of the politician. Big information being received by India Today from sources in the Mumbai police crime branch who now claim during interrogation that the accused are from the Bishnoi gang. The accused were doing a recce of the area for the last 25 to 30 days. All three accused came to Bandra East shooting spot by auto rickshaw. Sources also reveal that before shooting Baba Siddique, all three were waiting there for some time. Police suspect that there was someone else who was providing information to the accused. Let me go across to Vidya for more on this. She's joining me from the Bandra police station. Vidya, as far as the investigation in the case is concerned, last 8 to 9 hours, the pressure really now on the Mumbai police crime branch. Well, certainly. In fact, just some time back, we did get to know that what the Mumbai police is suspecting is that it is the handiwork of the Bishnoi gang, and the shooters have apparently really revealed this. Well, the accused will be produced in court who have been arrested, and the police will try to get information as to who really gave the hit order. Who is the contract person, the person who gave them the contract to kill? What was the reason? Has it got any connection to the Salman Khan house firing? Remember, some time back we had seen from Bishnoi gang, there had been a firing on actor Salman Khan's residence. Threats were given out. That entire case is still going on. The accused in that case are behind bars. How did this work out? Why did it work out? Things like this has to really be found out by Mumbai police, and that's the reason why they will seek further custody of the accused who had been arrested as of now by the police, and of course, they will also try to go through their phones, the call data record. So, Mumbai police certainly has a lot of work on its hand to find out what really happened, who was behind this entire incident. Because Baba Siddique is where I'm standing right now. I'm outside the crime branch unit where the investigation is centered around. By the investigators are right here, and the investigation is being conducted here. But Bandra is also a location where Baba Siddique represented for the longest time. He was a 3-time MLA from here, and certainly he had much clout. So people are in state of shock as to why would something like this happen. Mumbai police will have to speed up its entire investigation to tell the people right before election as to what really happened and why. That's right. Also, speaking of the investigation, I believe there were some shell casings that were also found at the spot where the killing took place. Could you tell us about more findings of the Mumbai police as things stand? Well, Mumbai police immediately after the incident, they sealed the entire, location, the spot of crime. There were some bullets, empties that were found at the spot. Also, there had been, what we have gotten to know is that there were some misfires as well. So, all those, entire incident as to finding out the ballistic reports as to which gun was used, the kind of where did the gun get procured from, all these aspects will be looked into by Mumbai police. But as of now, yes, they have sealed off the crime scene, and the forensic team is there at the spot. They have been trying to collect as much evidence as they can that could lead to the entire investigation to who really was behind this. Right. Stay with me, Vidya. Let me bring our viewers up to speed with what exactly has panned out as far as the killing is concerned. Now, NCP leader Baba Siddique died after being shot at by assailants in Mumbai's Bandra. He was rushed to the Leelavati hospital after being hit by multiple bullets in the stomach and on the chest, where he then later succumbed to injuries. Mumbai police crime branch claims that during interrogation, the accused did admit that they were from the Lawrence Bishnoi gang. The accused were doing a recce of the area for about 25 to 30 days. All three accused came to Bandra East shooting spot by an auto rickshaw. The police also suspects that there was someone else
also who was guiding and giving information to the three accused men. Siddique was shot near his own office. The incident occurred between 9:15 to 9:20 p.m. near the Ram Mandir, close to NCP leader's office, as he was bursting firecrackers on the occasion of the Shera. Two suspects have been arrested so far by the Mumbai Police Crime Branch, while one shooter is still absconding. Chief Minister Eknath Shinde has directed the Mumbai police officials to arrest the third absconding suspect as soon as possible and take strict action in the case. 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं। डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे दुख भरे वक्त में हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही चाहते हैं कि उनको ताकत दे, उनकी फैमिली मेंबर्स को इस हादसे से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही गहरा सदमा सबको पहुंचा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी एक हमारा दोस्त हो चुका हूं, ऐसा ही मुझे लगता है। बाबा का पुरानी यादें बहुत देर में ताजा है। Today, National Congress Party Ajit Pawar faction leader got shot and he got attacked, and in that attack he died. Right now we are on the spot where you can see the police is investigating, and the 6 rounds of 6 bullet shells can be seen. Here, as you can see, the marking has been done by the police, and the forensic team also reached here. They are investigating this whole incident. Baba Siddique's party office is here only, and from his office he was heading towards his house, but at that time when he was in the car, the attackers came and they started firing. Police snapped the two suspects, out of which one attacker was carrying 2 loaded magazines. That means they were fully prepared for this attack and they were well planned. The third attacker is absconding and police is right now in search of him. The case has been given to the Mumbai Crime Branch and right now they are investigating this case. With camera person Rohan, this is Dipesh Tripathi for India Today, Mumbai. Vidya continues to be with me on this broadcast. Vidya, you at the moment are at the Bandra police station, I believe. Could you tell me about what exactly is happening over there in terms of the activity? This is where the entire investigation, as I said, the crime branch is the one which is investigating, and this is where the Unit 9 office of the crime branch is located, where I'm standing, and this is where the investigators have begun the investigation since last night, since they got the investigation transferred from the, the entire case was registered, and the investigators here have confirmed as of now that it is the, from the interrogation that they have done of the
accused, the two people who had been detained earlier and then arrested, it is the Bishnoi gang that is involved. But certainly they're not leaving any stone unturned to find out if there was any other person or any other gang involved in this. But certainly as of now, the investigators are indicating that it is the Bishnoi gang, and they'll try to find out exactly why this hit was done. Remember, Baba Siddique was very close to Salman Khan, and we had seen an incident of firing outside Salman Khan's residence. So are these two incidences related? Why would someone hit Baba Siddique? It's something that no one seems to here understand, and that's one crucial question that the investigators have to find out. And for that very reason, the entire investigation, which would have actually gone to the Bandra police, has gone to the crime branch, and the crime branch has a lot of work on its hand. It has to go through CCTV footages of that particular area to find out where that third person who has not yet been arrested, where did he run, where could he be located. Remember in the Salman Khan incident as well, the accused had run away after firing. Through the CCTV footage, they were tracked as to how they tried to run over, cross railway track, change their clothes. But in spite of that, they were located. The way they managed to run, all that had been looked into by the crime branch at that time as well, and the accused were arrested in the just state. hold on, So just hold on, Vidya. Let me come back to you. Also joining me on this broadcast is my colleague Arvind Oja. Arvind, एक बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से सामने आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वही लाया कर रही है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है केस में. ये कैसे कर पा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई? ही इज बिहाइंड द बार्स, बट फिर भी ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करना. सलमान खान पहले थे कुछ ही महीनों पहले, अब बाबा सिद्दीकी. तो जेल के पीछे रह के भी कैसे ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हो पा रहा है? देखिए, अभी तक मुंबई पुलिस के सोर्सेस के जरिए ये जानकारी आई है कि जो 2 शूटर अरेस्ट हुए हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं. हालांकि जब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तरह का कोई इंसिडेंट अंजाम देता है तो बकायदा सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करके जिम्मेदारी लेते हैं. अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है. हालांकि आपने जो सवाल पूछा, लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है, लेकिन उसके जो एसोसिएट है और खास तौर से 3 ऐसे वांटेड गैंगस्टर हैं जो पूरा गैंग चला रहे हैं, जिसमें एक है गोल्डी बरार जो इंडिया और कनाडा से वांटेड है, अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था और सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका रोल था. दूसरा जो अहम है वो है लॉरेंस बिश्नोई का भाई, ये भी वांटेड है, अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई. सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी तो वो शूटर से जो लगातार बातचीत कर रहा था वो अनमोल बिश्नोई ही कर रहा था. उन शूटर को अनमोल बिश्नोई ने रिक्रूट किया था. तीसरा जो वांटेड गैंगस्टर है राजस्थान का रोहित गोदारा, ये भी अमेरिका में बैठा हुआ है. सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई थी उसमें इसका भी रोल सामने आया था. इसने आर्म्स एंड एम्युनेशन वो शूटर्स को प्रोवाइड कराया था. तो भले ही लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा है. और खास तौर से अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में हाल फिलहाल में अगर कोई गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक्टिविटी बढ़ाई है, तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है. और उसकी वजह है सलमान खान. 2 बार रेकी सलमान खान की पहले भी हुई थी, जिसका खुलासा इंडिया टुडे ने ही किया था, जिसमें एक बार सलमान खान जब रेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स पहुंचे थे, वहां की रेकी की गई, लेकिन किसी तरह से अटैक नहीं हो पाया. दूसरा, पनवेल में जो सलमान खान का फार्म हाउस है वहां पर रेकी हुई थी, 8 से 10 शूटर थे, लेकिन वहां वो अटैक नहीं कर पाए. तीसरी बार फाइनली सलमान खान के बंगलों पर ही जो फ्लैट है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां पर फायरिंग की गई. तो जिस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अरेस्ट हुए हैं, ऐसा मुंबई पुलिस का दावा है, मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है. तो और बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो अभी तक अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है तो इसमें मोटिव सिर्फ एक ही दिखता है, वो है सलमान खान. इसकी एक वजह भी है कि सलमान खान जिसके भी करीब जाते हैं बिश्नोई गैंग उसको अपना दुश्मन मानता है. कनाडा में याद कीजिए गिप्पी गेरवाल पंजाबी सिंगर, उसके घर पर फायरिंग हुई थी और कुछ महीने पहले एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग हुई थी. दोनों फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई थी.
फायरिंग के बाद बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जाता है कि गिप्पी गेरवाल और एपी ढिल्लन को बिश्नोई गैंग मैसेज देता है कि आप दोनों सलमान खान को भाई भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं, सलमान खान से दूरी बढ़ा दो। तो आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई गैंग सलमान खान और सलमान खान से जो करीबी बढ़ाता है उसे अपना दुश्मन मानता है। अभी जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए उसमें एक हरियाणा का है, एक उत्तर प्रदेश का है। मुंबई पुलिस का दावा है कि वो दोनों बिश्नोई गैंग के हैं। मोटिव क्या है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जितना कुछ पिछले दिनों अगर मुंबई की बात की जाए, जिस तरह का बिश्नोई गैंग का इंसिडेंट रहा है, माना ही जाता है कि सलमान खान से जो करीब रहता है, जो भाईजान के करीब है, वो बिश्नोई गैंग का दुश्मन है। एक चीज और आपसे मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पे आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे अमेरिका में भी है, यहाँ मुंबई में है, और तरह तरह और विभिन्न एरियाज में भी सारे इनके जो एग्जीक्यूट करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के लोग हैं, सारे फैले हुए हैं एक तरह से देश विदेश दोनों तरफ। कितना बड़ा है ये नेट एक्चुअली, कुछ उस बारे में आप बता सकते हैं? कितना बड़ा नेट है और कौन इस इनके रेडार पे है? सलमान खान का एक नाम आपने बताया, कोई और नाम जो आपके अभी सोर्सेज बता रहे हैं आपको? नहीं, बीते दिनों देखिए गिप्पी गेरवाल की कनाडा में, गिप्पी गेरवाल काफी फेमस सिंगर, उनके घर पर फायरिंग कराई, वीडियो रिलीज किया। एपी ढिल्लन के घर पर अभी कुछ तकरीबन 1 महीने हुए होंगे, एपी ढिल्लन के कनाडा के घर पर फायरिंग कराई और उसका वीडियो भी रिलीज किया जिसमें शूटर्स पहुंचते हैं और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि ये दोनों जो शूट आउट हुए थे, उसमें शूट आउट के बाद बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और दावा किया कि सलमान खान से करीबी है, सलमान खान के साथ एल्बम में आप दिखते हैं, इस वजह से हमने ये फायरिंग कराई। बिश्नोई गैंग की बात की जाए तो 700 से 1000 के लगभग इनके शूटर हैं, जो वो शूटर दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, सब जगह फैले हुए हैं। और मोडस ऑपरेंडी बहुत अलग है। लॉरेंस बिश्नोई की फैन फॉलोइंग वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया के जरिए ये रिक्रूट करता है गैंग, खासतौर से अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, अमेरिका में बैठा हुआ है, वो और उसका गैंग सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जो यंग लड़के हैं उनको रिक्रूट करते हैं। उसके बाद सिग्नल ऐप के जरिए उनसे बातचीत करते हैं। सिग्नल ऐप से बात करने का मकसद ये होता है कि एजेंसी जल्दी उनको ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, बाबा सिद्दीकी के इंसिडेंट की, और अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जैसा मुंबई पुलिस के सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं, तो सीधे सीधे मेरे दिमाग में यही आता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी है। तो क्या सलमान खान से करीबी होने की कीमत बाबा सिद्दीकी को चुकानी पड़ी? क्योंकि अगर बीते दिनों का इंसिडेंट देखें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत ज्यादा डेस्परेट है सलमान खान को लेकर। 2 बार पहले रेकी हुई थी और एक बार तो बकायदा गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर ही फायरिंग करा दी। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो शूटर्स थे जिन्होंने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग की थी, उनमें एक शूटर की मुंबई क्राइम ब्रांच में संदिग्ध मौत हो गई थी कस्टडी में। उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी ज्यादा गुस्से में था। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जाए तो आज की डेट में एक बड़ा गैंग हो चुका है और खुद एनआईए ने ये अपनी चार्जशीट में कोर्ट में माना कि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम 90s में जिस तरह से उसका गैंग बड़ा हुआ था, कुछ उस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बड़ा हो चुका है। तो बकायदा जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में ये माना कि दाऊद इब्राहिम के पैरेलल दाऊद इब्राहिम का गैंग जिस तरह से राइज किया था, उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइज हुआ है। और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो अहमदाबाद जेल में बंद है। हालांकि अहमदाबाद से कई बार उसके ऑडियो आते हैं, अहमदाबाद जेल प्रशासन उससे इनकार कहता है ये ओल्ड वीडियो है या ओल्ड ऑडियो है। लेकिन बिश्नोई गैंग के जो लोग बाहर है, खासतौर से अमेरिका में बैठे हैं, गोल्डी बरार, उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, राजस्थान का गैंगस्टर रोहित गोदारा, ये 3 ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव है। सोर्सेस बताते हैं कि 700 से 1000 शूटर इसके गैंग में है। सोशल मीडिया के जरिए ये यंग लड़कों को जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उनको रिक्रूट करते हैं और इसी वजह से वो एजेंसी के रडार पर नहीं आ पाते हैं। अभी ये जानकारी मिली है कि जो बाबा सिद्दीकी के शूटर्स हैं वो 20-25 दिन तक उसकी रेकी की और उसके बाद तब जब जाकर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये गैंग
सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल करता है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी पर जो अटैक हुआ है वो 9mm की पिस्टल से गोली चलाई गई है। 9mm पिस्टल अमूमन जो पुलिस के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। तो जो ये गैंग इस्तेमाल करता है वेपन, वो भी कोई लोकल आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सोफिस्टिकेटेड वेपन का ये इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से, इंडिया के बाहर से वो मंगवाते हैं। हर्षित, अरविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो सारे डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लियर कनेक्शन देयर ऑफ द सलमान खान firing that took place at his residence and what we saw yesterday in Bandra, as was summed up by my colleague Arvind Ojha. Let me bring in more news as far as this story is concerned, because politics is speaking on this particular story. Now, the opposition has gone all guns blazing against the Eknath Shinde government. Rahul Gandhi has slammed the law and order situation in Maharashtra. He says that the government must take responsibility and justice must prevail. Going across to Vidya, my colleague, for more on this. Vidya, as we move along in this story, pressure mounting now on the Eknath Shinde government and politics is speaking. Well, it certainly is. In fact, there is an election in the next few weeks probably, and an incident like this certainly has created quite a tremor in the political field right now. In fact, just about every, this incident has given ammunition to the opposition to make sure that, they tell everyone around as to how bad the situation of law and order is in Maharashtra, especially Mumbai. Remember, just a few months ago, there's firing on actor Salman Khan's house, and a few months later you have an incident where Baba Siddique is killed, who was close to Salman Khan. And of course, these incidences together, create quite a terror amongst people as to, and a lot of people, in fact, local people were talking about it as to how, this reminds them of the time when in the 70s and the 80s, when the underworld was very active, and almost every day you had an incident of someone being shot or, someone getting a threat call for an extortion. Though that kind of memory comes back, though in this case there is no such call. And in fact, whether there was a threat perception on Baba Siddique, the Mumbai police is still trying to understand as to what really led to something like this. But as of now, the two shooters are crucial, accused in the hands of Mumbai police, who will have to really lead them to probably what was behind this. Because as Arvind also was pointing out, in this particular case, like we had seen in, say, even in Salman Khan's case or other incidences where Bishnois are involved, they do not, this time there is no social media post. Like last time around, Anmol Bishnoi had put out a post, who still stays abroad, but he had put out a social media post and he's shown as a wanted accused in Salman Khan firing case. In that incident, when there is a social media post claiming that the entire Bishnoi gang is behind it, this time around there is no such claim. That's one of the reasons why people are still questioning as to whether it really is the Bishnoi gang. But Mumbai police has confirmed that the shooters who were arrested, they do belong to the Bishnoi gang, and that's one of the crucial piece of evidence that would probably lead the investigators to the ultimate reason as to why this really happened. But as of now, there is a lot of work that Mumbai police has, trying to get call data records, sifting through them to find out who these people were in touch with, what were the calls they had, where were they residing, check out those places where these people had been residing in the last many days, that they were doing the Reiki, where were they put up. Because remember, in Salman Khan's case, the accused, they used to live around the Panvel's farmhouse of Salman Khan. So certainly, all these investigation will have to be done by Mumbai police. Absolutely. It's a thorough investigation needed in this case. Those are the orders from Eknath Shinde, the Chief Minister of the state as well. News coming in the Baba Siddique murder case. It's now being known to India today that Baba Siddique's body has been taken for post-mortem. Lilavati Hospital doctors have told India today that
Baba Siddique was brought to the NHRC Emergency Medical Services at 9:30 p.m. on Saturday in an unresponsive condition with no pulse, no cardiac activity, no blood pressure, with a history of gunshot wounds on the chest. Going across to Vidya for more on this. Vidya, what more details can you share with us as far as the post-mortem is concerned? Postmortem, rules specify that, even the videography of the postmortem has to be done to make sure that there is nothing, mischievous that is done in the postmortem. And especially in such kind of cases, the doctors do prefer that postmortem, when it is done by the doctors, it is videographed. So all procedures are being followed is what we have been told, wherein, after the inquest Panchanama was done, immediately the body was brought in for postmortem. And, the bullets, the kind of injury, all that will have to be inspected, and the post-mortem report is extremely crucial. Remember, in any trial that because obviously the two accused have been arrested, they will be put to trial at some point in this entire case. If there are no other accused arrested, even then the trial would certainly go. So the inquest Panchanama and the entire procedure for postmortem are extremely important, which is what the crime branch here will have to ensure. They'll try to make sure that the post-mortem details, if they have any, could actually lead them. Remember, as Arvind was speaking about the importance of the gun, as to how this particular gun was a high-end gun and not some desi katta that was used. So all these things reveal a lot about the accused, and that is one of the reasons why the post-mortem report is very crucial. And after the post-mortem is done, later in the evening, the body will be kept for people to pay their last respects, and then around 7 or 8 in the evening, the body will be taken for a cremation at a kabristan in South Mumbai. All these details are being worked out by the family, and of course at this juncture, people in Bandra who have been supporters of Baba Siddique for the last many decades, since he has been represented this constituency since 1990s. They are they have been wanting to know what exactly is happening, why, and that's something that Mumbai police will really have to reveal a lot about what is really happening, because people really want to know what really led to something like this. So investigation is very crucial, along with post-mortem report that is being undertaken right now. That's right. With this, stay with me. I just want to recap for our viewers what exactly is it that's happened in this case. Let's tell them about the big developments that we know here at India Today so far. Now, NCP leader Baba Siddique was on Saturday shot dead by 3 attackers in Mumbai's Bandra area. He was shot dead outside his son's office on Saturday evening. He was then rushed to the Leelavati hospital after being hit by bullets in the stomach and chest, but succumbed to bullet injuries later on. The Mumbai Police Crime Branch probing the case claims that during interrogation, the accused claimed to be from the Bishnoi gang. The accused did a recce of the area for the last 25 to 30 days. All 3 accused came to Bandra East shooting spot by an auto rickshaw. Police also suspect that there was someone else who was also providing them with the information. 2 people have been nabbed so far in connection with the killing of the NCP leader, with one hailing from Uttar Pradesh and the other from Haryana. The 3rd person involved in the killing is still on the loose. Baba Siddique's attackers used firecrackers as cover to shoot the NCP leader. He was bursting firecrackers outside his son's office on the occasion of Dussehra when he was shot at. Salman Khan, Shilpa Shetty, Sanjay Dutt and other Bollywood celebrities visited the Leelavati hospital to meet the family of the NCP leader. The actors expressed their condolences and support to the grieving family during this difficult time.
Bringing in Dev Kotak, my colleague who's joining me from the Cooper Hospital right now. Dev, in terms of the activity at the hospital, what is it that you're seeing right now? Well, Harshit, right now, as you rightly mentioned, that I am outside the Cooper Hospital. This is the lane which leads to the mortuary. In the cold morgue storage area is where his body has been kept at the moment. In fact, it was brought here earlier this morning from Lilavati Hospital. As per protocol and procedure, his body, since he's a big leader, his body was brought here. The postmortem needs to happen and go through a civic-run hospital, which is why it is here. In fact, we are being told that around 10:30 a.m. his body will be taken out in a casket where family, friends and the close ones and dear ones can also pay their respects. So his body will be taken to the Bandra Pali Hill residence, which is where he currently lives. What we are also being told is that in the evening around 7 p.m. the janaza, as per the Muslim culture and the religion, will also happen, including the prayers later in the evening. But of course, this is a highly tragic incident. As you rightly pointed out to the details, the third accused is still at large, while two have been arrested, and they claimed to be a part of the Lawrence Bishnoi gang. Karnail Singh hails from Haryana and Dharmaraj Kashyap hails from Uttar Pradesh. As of now, the Unit 9 crime branch of the Mumbai police is probing the case. So these are the kind of details that we have at this point in time. But as you also know, that a team of forensics was present at the spot where his car was fired upon and he was killed in that. 3 bullet casings have also been recovered from the car, Harshit. So these are the kind of details that we have at this point in time, but we'll continue to track the story further ahead. Stay with me. I also request Vidya to stay on as well, because this is a story that's had political ramifications as well. A political war of words has erupted over Baba Siddique's murder. Opposition Mahavikas Aghadi went all guns blazing against Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde-led government for the deteriorating law and order situation in the state ahead of assembly elections. While condemning the incident, MDA leaders asked the Maharashtra government to fix accountability. They even asked Chief Minister Shinde and Deputy Chief Minister Fadnavis to step down from their post. Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Shinde directed the police officials to maintain law and order in the state and take strict action. ये जो घटना हुई बड़ी दुखद घटना हुई है और इस घटना के पीछे कौन है इसकी जांच की भी आवश्यकता है। एक रूलिंग पार्टी के लीडर के ऊपर दिन दहाड़े मुंबई में उनको शूट किया जाता है, उनकी जान चली जाती है। इसका मतलब यही है कि महाराष्ट्र में कानून और सुव्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। कानून व्यवस्था नाम के लिए स्टेट के अंदर बची नहीं है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनालिटी है, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। हमारे शहर मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, 3-3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है, अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है, दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन इसमें कोई मुंबई में
लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। जो इशू है वो शायद कोई पर्सनल SRA का कोई इशू है, जैसे हमारे सामान्य मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हमारी मांग सरकार से रहेगी। और जो भी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन देना है वो मुंबई पुलिस करे। It is unbelievable, the news that Baba Siddique is no more, and he was killed. Cold-blooded murder of my friend Baba Siddique, known him for 3 decades. There's just no words to express my grief and my shock. And it's happened in the heart of Mumbai city, that too to a high-profile politician. Huge question mark on the law and order of Mumbai. This is very tragic and unbelievable. What is happening to the law and order of this country and this state? That is the question that I'm asking to the government. It is absolutely not abominable, it's condemnable, and we strongly condemn this. Dev continues to be with me. Dev, could you tell me as to what the latest is in terms of reactions that you've been able to track from the opposition, because they've gone very aggressive as far as this whole development is concerned. Could you tell me about some of the latest reactions you've been able to gather? Well, yes, Harshit. It is not that the opposition has just gotten activated right now or keeping it contained only to this situation or incident. In fact, the opposition has been on an aggressive front foot for quite some time now, be it the Badlapur molestation incident, or be it the killing of Abhishek Ghosalkar, or the other shooting incidents also that have taken place or occurred in the state in the last 1.5 to 2 years. So in fact, this is something they have been pointing out repeatedly and been questioning Devendra Fadnavis, who also happens to be the state home minister, over failing law and order, be it the incidents of shooting like these, or the crimes against women also, for a matter of fact. These kind of things have really bothered the opposition. They have definitely raked it up, and they have been aggressively attacking Devendra Fadnavis, asking him as to what was really happening. In fact, if you see, a lot of politicians since yesterday from the opposition, most of them from the Mahayuti, have been saying that if the common man, if a politician with a wide security cover is failing to be protected, then how can the common man expect protection? So these are the kind of questions that you hear. In fact, right now also we heard Priyanka Chaturvedi and Pawan Khera talk about the failing law and order in the state. And not to forget the fact that Maharashtra is due for elections this year. We expect the elections to happen sometime next month, or definitely before the year ends. So such news of failing law and order is definitely not good news. But this incident does point out to the glaring irregularities and in a certain sense as to how the security sort of lapsed also. In fact, Harshit, this very incident is reminded of the deadly era between the 1980s to the 1990s, where shootouts and such kind of killings were a very common incident. So something like this that has surfaced in the city, in the hustling bustling metropolis of Mumbai, this definitely does point out to the fact in terms of what was really happening, where the bodyguards were, and how could such a major lapse really happen. And you know that after the 3 bullets were fired, 2 of which were found inside his chest, according to the bite of the CEO of the Leelavati hospital. Like I also mentioned as well, that the 3 bullet casings were found from inside the car. So this somewhere reflects the fact that what was really happening, and why and how his personal bodyguards failed to protect him. Okay, stay with me, Dev. As you continue to track this story, developments continue to stream in. Now, there's more that we're getting to know right now. It's believed that there's a Salman Khan connection to the Siddique killing. Siddique murdered for being close to Salman Khan is what we're getting to know right now. Sources say that
the Bishnoi gang considers not only Salman Khan but also those who are close to him as their enemies. Before I bring in my colleague Arvind for more on this, let me tell you what exactly our sources telling India Today right now. The interrogation that's on for roughly about 12 hours now, since the time that the two accused have been nabbed, well, it comes across that the two members have told the Mumbai police that the perception within the Lawrence Bishnoi gang is that anyone who's close to Salman Khan will be looked at as an enemy of the gang. Arvind Oja joins me for more on this. Arvind, सूत्र अभी ये बता रहे हैं कि जो सलमान खान के नजदीक देखा गया है, माना जाता है, बिश्नोई गैंग उनको अपने टारगेट पे लेगा ही लेगा। बिल्कुल, देखिए, और जो इंटरोगेशन रिपोर्ट आई है एनआईए के सामने या अलग अलग एजेंसी के सामने, बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये सभी एजेंसी के सामने माना है कि प्राइम टारगेट हिट लिस्ट में नंबर 1 पर सलमान खान है। और बीते दिनों जिस तरह से अटेम्प्ट किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर घर पर ही फायरिंग करवा दी थी सलमान खान के घर पर, और उसके पहले 2 बार रेकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई थी जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। उसके बाद शूटर्स मुंबई पहुंचे थे और सलमान खान के न सिर्फ पनवेल के फार्म हाउस की रेकी की गई, बल्कि सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां भी शूटर्स ने बकायदा प्रॉपर रेकी की थी। और कई बार ऑन कैमरा लॉरेंस बिश्नोई ये कह भी चुका है कि वो सलमान खान को मारेगा ही मारेगा। ये कई बार फ्रंट पर ओपन कैमरे पर न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बल्कि गोल्डी बरार कह चुके हैं, और न सिर्फ कह चुके हैं बल्कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी करा चुके हैं। अब बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है और उसमें जो शूटर है वो, जैसा मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, तो मोटिव सिर्फ यही फिलहाल समझ में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेगा। तो सिर्फ इसलिए मारेगा कि हो सकता है कि सलमान खान से जिस तरह की करीबी थी बाबा सिद्दीकी की, ये एक मोटिव जरूर हो सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अब ये मोटिव स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि बीते दिनों गिप्पी गेरवाल पंजाबी सिंगर, उन पर कनाडा में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग ने पोस्ट डाला, उसमें क्लेम किया कि गिप्पी गेरवाल सलमान खान के बेहद करीबी है, इसलिए बिश्नोई गैंग ने फायरिंग कराई। दूसरा सिमिलर इंसिडेंट होता है पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग होती है अभी कुछ महीने पहले, जिसका वीडियो भी रिलीज हुआ था। इंडिया टुडे ने वो अपने व्यूवर्स को दिखाया था कि किस तरीके से एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग हो रही है। उस फायरिंग के बाद भी सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग क्लेम करता है कि एपी ढिल्लन सलमान खान के एल्बम में नजर आ रहे हैं, सलमान खान को भाईजान भाईजान कह रहे हैं। इस वजह से बिश्नोई गैंग ने एपी ढिल्लन को निशाने पर लिया। तो न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है, बल्कि सलमान खान के जो बेहद करीब जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उनको भी निशाने पर लेता है। इसमें एक एंगल और है कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जिन शूटरों ने फायरिंग की थी, उसमें एक शूटर की मुंबई में पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत हुई थी, उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी ज्यादा गुस्से में था। तो जो क्लेम मुंबई पुलिस का है कि जो शूटर है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे में मोटिव जो है अभी जो एजेंसीज है उनको यही समझ में आता है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी को निशाने पर क्यों लेगा, शूटर्स भेजकर मर्डर क्यों कराएगा। तो मोटिव जो अभी तक समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि क्या मैसेजिंग देने की कोशिश सलमान खान को फिर से की गई, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई बकायदा एजेंसियों के सामने बात एक्सेप्ट कर चुका है कि प्राइम टारगेट पर सलमान खान ही है। Okay, so Salman Khan's name constantly popping up in this story. He was seen yesterday at the Leelavati hospital as well. I thank Arvind for sharing all those details with us.